Hello, good evening. Group में share कर. Hello, good evening. Am I audible and visible? Sai Samit Reddy, please tell me. Audibility, visibility बताइएगा. Is everything okay? Aman Singh. Okay, very good. Thank you. So very good evening, boys and girls. Welcome to GFG. Khalil Khan here. और आज के सेशन में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. कई बच्चों के मैसेजेस आए हैं, कई बच्चों के टेलीग्राम पर मैसेज है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस है, ईमेल है, एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न, पर्टिकुलरली जो गेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके एक पर्टिकुलर कंसर्न जो है कि सिलेबस बैकलॉग है. ओके ओके साई समंत रेड्डी, आई विल एड्रेस योर इशू. साई समही रेड्डी. ओके, I have seen your comment. I will address. Good evening. Good evening. संदीप कुमार नायक, ठीक है. आपके 8 सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. विल एड्रेस द क्वेश्चंस. देखेंगे क्या आप इतने जो रिमेनिंग समय है, बाकी का जो वक्त है, बाकी का जो समय है, उसमें आप क्या कर सकते हो. लेट अस ट्राई टू एड्रेस अपॉन द इशू. ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स. या आई हैव सीन योर कमेंट्स. प्लीज एक्सरसाइज पेशेंस. थोड़ा सा सब्र कीजिएगा. आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर इशूज. तो बॉयज एंड गर्ल्स, प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चों ने जो सिलेबस अपना स्टार्ट किया, लेट स्टार्ट किया, मे भी हो सकता है 5 मंथ बिफोर, 4 मंथ बिफोर, 6 मंथ बिफोर, तो दे आर एबल टू कंप्लीट मे बी 50% ऑफ द सिलेबस. किसी ने 60% कंप्लीट किया होगा, किसी ने 70% कंप्लीट किया होगा. और ऐसे बच्चे जो कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो पा रहा है, रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए दुश्वारी हो रही है. ठीक है, तो मार्क्स कमा रहे हैं. सो व्हाट शुड बी द रिवीजन अप्रोच, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द टेस्ट सीरीज. ऐसे कई क्वेश्चंस है जिनका इस वीडियो में हम सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे. दीज आर ऑफ कोर्स इनपुट्स. ये इनपुट्स के बेसिस पर आपने उस अपने ओन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होगा, सो दैट you can perform better in the remaining जो अभी टाइम है. मे बी यू कैन से 1.5 months जो टाइम है, 45 days, 50 days. जय दत्ता 8594, yes, you can come to my college and meet me. Of course, you are welcome. Arutog, yes, definitely you can score 60 plus marks. ओके हाँ, यूट्यूब पर मैराथन सेशन आएगा और महा रिवीजन भी आएगा. PYQ सीरीज भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. या रितिका कुमारी, आपके 2 सब्जेक्ट्स रिमेनिंग है, ठीक है. और जो बच्चे साथ 3rd ईयर में हैं वो क्या करें, हम देखेंगे. एड्रेस, आई विल ट्राई टू एड्रेस अपॉन द इश्यूज. तो सबसे पहले बच्चों का कहना यह है कि अगर आपके 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट्स अभी बाकी हैं, तो क्वेश्चन आपके माइंड में यह है कि शुड आई गो अहेड विद दो सब्जेक्ट्स, मुझे पढ़ना है चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर कैसे पढ़ना चाहिए. ये सब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू कवर अप द सब्जेक्ट्स एंड टू लीव द सब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑल दिस विल ट्राई टू टेक अप इन दिस सेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अगर आप रियलिटी चेक देखोगे तो कहना यह होगा कि यू आर नॉट अलोन इन दिस रेस. ऐसे कई थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने सारा सब्जेक्ट्स अब तक कंप्लीट नहीं किया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट डिसहार्टेंड. यू आर नॉट अलोन इन दिस रेस. कई बच्चों का ऐसा होगा कि जिनका सब्जेक्ट्स कंप्लीट ना हुआ होगा, जिनके सब्जेक्ट सारे कंप्लीट नहीं हुए होंगे, या अगर पार्शियली कंप्लीट हुए होंगे, कुछ टॉपिक्स मिसिंग होंगे.
सो यू आर नॉट अलोन। हाँ, कंपाइलर है, नेटवर्क्स है, ठीक है। तो देखिएगा आप, विल ट्राई टू एड्रेस अपॉन, और अगर आपको उसको कंप्लीट करना है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कंप्लीट, और कैसे किस तरीके से आप स्मार्ट वे में कंप्लीट कर सकते हो, ये हम एड्रेस करेंगे, डिस्कस करेंगे। The truth about GATE preparation is that thousands of aspirants across the country face syllabus backlog. Every year this problem happens. There will be some good students, there will be some good top rankers who have left some topics, who have left some subjects, but still they could be able to score good marks. तो आपने क्या करना है? We'll address upon. So time is limited, but it is not lost. क्योंकि गेट के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, 7th, 8th, 9th, 10th लाइक दैट, 7th, 8th, 14th एंड 15th. सो टाइम इज लिमिटेड बट नॉट लॉस्ट. तो अगर आप ये जो रिमेनिंग टाइम है 45 डेज, अगर मान के चलो आप 45 डेज, 50 डेज, तो हाउ यू आर सपोज टू यूटिलाइज दिस टाइम इन अ वेरी स्मार्ट वे so that you can capitalize this opportunity to boost up your marks, your score. तो कैसे आप कर सकते हो? तो गेम चेंजिंग इनसाइट ये है कि सक्सेस इजंट अबाउट फिनिशिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट स्मार्ट स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन दैट मैक्सिमाइजेस योर पोटेंशियल. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज नॉट अबाउट कवरिंग द होल सिलेबस, इट इज कवरिंग द सिलेबस इन अ वेरी स्मार्ट वे, इंटेलिजेंट वे, with a more strategic approach which will maximize your chances of scoring good score. So essentially आपको जो सिलेबस इनकम्प्लीट है उसके वजूहात क्या है, what are the reasons perhaps for the subjects of the syllabus remaining incomplete. हो सकता है नो स्ट्रक्चर्ड प्लान, आपने बिल्कुल एक डायरेक्शनलेस आई वुड से अप्रोच आपने फॉलो किया होगा फॉर द कवरेज ऑफ सिलेबस. डायरेक्शनलेस स्टडी लीड्स टू नेचुरली इनएफिशिएंसी, वेस्ट ऑफ टाइम विदाउट मेकिंग गुड प्रोग्रेस. और सिलेबस इज वेरी वास्ट, लाइक इन स्ट्रीम्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है. सो सिलेबस इज वेरी लास्ट, सो देयरफॉर आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, efficiency drop होगी in the coverage of syllabus. So therefore that could also be one of the reason. And sometimes what happens is आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको लगेगा कि मैंने अच्छे तरीके से, मैं जब at the time of solving questions, PYQs है या टेस्ट सीरीज है, आपको लग रहा होगा कि I am unable to make a recall, मुझे याद नहीं आ रहा है. So that is maybe because of ignoring the revision. Skipping regular revision and mock test causes massive loss of retention and exam fearness or lack of exam readiness. So boys and girls, one of the success factor for GATE is revision and PYQ. ये काफी ज्यादा important है. Without making proper revisions, proper rounds of revisions, proper iterations of revision, and without solving PYQs, if you go and write the exam, that is going to hamper your progress, that is going to hamper your performance in the GATE exam. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेकिंग द रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव कंप्लीटेड. तब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये है, सुनिएगा प्लीज, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे अभी 3 सब्जेक्ट बाकी है, 2 सब्जेक्ट बाकी है, 4 सब्जेक्ट बाकी है, क्या करना चाहिए? तो अगर आपको ये लग रहा है कि विद इन 45 डेज यू कैन नॉट कंप्लीट द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, यू कैन नॉट कंप्लीट फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट डू द रिवीजन, then ideally what is supposed to be done? I mean, my frank opinion, my frank advice is don't leave or neglect the subjects which are not completed. आप उन्हें totally neglect मत कीजिएगा. You should make a smart study. Like for example, I am saying, not to basically promote, लेकिन GFG platform पर we have come up with a crash course, paid crash course, with a pure intention of helping the students at a very affordable price, with a pure intention of helping the students who are unable to complete the subject. तो अगर आपको एक्सेस हो तो आई वुड रिकमेंड टेक अप और ट्राई टू कंप्लीट द सब्जेक्ट्स इन क्रैश मोड फॉर दिस रादर देन लीविंग द होल सब्जेक्ट. सारा का सारा छोड़ने के बजाय अगर आप वो क्रैश मोड में करोगे, आप यू ट्राई टू वॉच द वीडियोस एंड ट्राई टू कवर अप द सिलेबस, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. अब रही बात, आप पूछोगे सर अगर क्रैश कोर्स यूट्यूब पर जो है कई प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, क्या वो क्रैश कोर्स हम वॉच करके अफोर्ड कर सकते हैं? कैन इट गोइंग टू सर्व द पर्पस? इज इट गोइंग टू सर्व द पर्पस? Boys and girls, to be honest, जो क्रैश कोर्स है यूट्यूब पर, फ्री क्रैश कोर्स है ऑफर्ड बाय मेनी प्लेटफॉर्म्स, आई डोंट से दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज कंप्लीट, इट इज गोइंग टू सर्व द पर्पस फॉर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस. ऐसा सर्व हर नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल.
ठीक है. That crash courses of YouTube will be helpful for revision purpose. To be honest, to be frank, will be definitely helpful for revision purpose. It basically cannot serve for full coverage of the syllabus, full coverage of the course. So maybe the crash course of GFG, for example, we are covering at least 75 to 80% of the syllabus along with practice questions, along with PYQs. So that is going to basically help. Vineet Gonia, yes beta, CSC 2025 GATE CS 2026 is worth definitely for PSUs के लिए. आप देखोगे videos available है GFG channel पर, आप देख सकते हो what PSUs you can basically opt for with the score of GATE 2026. All right. So that is I just say. So another important aspect for not performing well ये है कि ignoring the aptitude, neglecting the aptitude. Generally, the aptitude and the engineering mathematics play also a very crucial role in boosting or scaling up your marks. So boys and girls, don't neglect aptitude. कई बच्चों का ऐसा होता है, ये सोचते हैं कि लास्ट में मैं एप्टीट्यूड करूंगा, मैथमेटिक्स करूंगा लास्ट फ्यू डेज में, with an intention that I can optimize my time for other technical subjects. So don't do that. Don't neglect aptitude and engineering mathematics. Otherwise, that is going to hamper आपके performance, आपका score के ऊपर काफी impact होगा because of neglecting the aptitude and engineering mathematics. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट. तो स्टेप्स में हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हाउ यू शुड ऑप्टिमाइज योर टाइम इन द रिमेनिंग 60 डेज, 50 डेज और 45 डेज अगर आपके हिसाब से. तो एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज योर सिलेबस. तो सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लो, देखो कि कौन से सब्जेक्ट्स आपने अभी मिसिंग है, कौन से सब्जेक्ट्स इनकम्प्लीट है और कौन से टॉपिक्स इनकम्प्लीट है. एंड विद इन दी सब्जेक्ट्स विच आर लेफ्ट ओवर फॉर यू, ट्राई टू आइडेंटिफाई हाई यील्डिंग टॉपिक्स, हाई वेटेड टॉपिक्स. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करोगे तो आई वुड से हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या है. हाई यील्डिंग टॉपिक्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल आई से CPU शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग एंड मल्टी लेवल पेजिंग, फाइल सिस्टम में एलोकेशन मेथड्स है. दीज आर हाई यील्डिंग टॉपिक्स. तो एटलीस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहूंगा इन सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डोंट ट्राई टू नेग्लेक्ट दिस टॉपिक्स. एटलीस्ट ये टॉपिक्स को अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ दिया है तो ये टॉपिक्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, ये टॉपिक्स के PYQs को बेसिकली सॉल्व कीजिएगा. उसी तरह एल्गोरिथम्स है, उसी तरह TOC है, नेटवर्क्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है. हर सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट्स आपके छूट चुके हैं, यू ट्राई टू प्रायोरिटाइज and score well on the high yielding topics. Focus on core concepts. That's what I said just now. And play to your strengths. Start with subjects you are confident in. Like जो subjects छूट चुके हैं, you start among them which you feel that you can easily cover up with minimum amount of time and maximum potential, maximum efficiency. ठीक है? Step 2, create a realistic time-bound study plan. तो जितना भी remaining time है, एक strategic time plan बनाइए, strategic roadmap बनाइए, right? So that there is no waste of time. And focus on, as I said, in that plan on high yielding topics of the leftover subjects. So meet weekly targets, set weekly targets, daily goals, right? Balance new topics and revision. So generally I would recommend कि जब आप 45-50 डेज के प्लान में आप रिमेनिंग सब्जेक्ट्स भी करना है, रिविजन भी करना है, PYQs भी देना है, मॉक टेस्ट भी देना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड योर टाइम. Like the day or time of day should be divided into two parts. The first half of the day should be basically for completing the subjects, incomplete subjects, leftover subjects, backlog subjects. For the remaining second half of the day, you should focus on some time on revision, some time on solving PYQs and test series. इस तरीके से parallelly आप करोगे, then I'm very sure you should try to balance your study plans. So second cycle exam approach, what should we first attempt easy questions? I mean, these for exam approach that we'll talk about later. During this time, you make sure that your mental health is also properly maintained. Include short breaks, physical activity, stress management routines. See, almost in every presentation we are talking about this. Maintaining health and hygiene, maintaining good sleep, and then diet is quite essential for optimizing your performance. Step 3, smart revision and mock test. Revision, recall and repeat. Idealistically ये है concept के whenever you are giving a mock test, कई बच्चों का होता है, sir I am unable to make a recall, I'm not getting well in the mock test and maybe test series
या फिर PYQ. So the best thing is whenever you give one mock test, you identify what are the subjects, जो subjects में आपने अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म किया, और या जिसमें आपने एरर्स है, जिसमें आपने काफ़ी मिस्टेक्स किए हों, राइट, यू आइडेंटिफाई दो सब्जेक्ट्स. सो वो सब्जेक्ट्स का व्हेन बिफोर गिविंग द नेक्स्ट मार्क टेस्ट यू ट्राई टू मेक ए रिवीजन. Without making another round of revision, my recommendation is don't go for second mock test. So don't just keep on giving the mock test without making any revision. So for every mock test, in between two mock tests, there should be one cycle of revision, and particularly for those subjects जिसमें आपको weakness है, particularly those subjects in which you are feeling weak, you try to revise and then go for mock test. That is the correct approach. Okay, and fundamentally मेरा कहना यह है कि mock test is basically meant for two purposes. Number one, to identify your level of preparation in all the subjects. कब सारे subjects में आपने comprehensively पढ़ा है या ना पढ़ा, ये आपने देखना है. Secondly, mock test will help you for time management. Don't try to compare the performance of the mock test of yours. कितने marks आपको आ रहे हैं, कितने marks आपके students को आ रहे हैं. Don't go for performance. Basically, nobody can say that my mock test is on comparison with on par with the level of GATE. No. The basic objective of test series or mock test is to emphasize only on two aspects. Number one, assessing your preparation level, right, in terms of coverage of the topics, in terms of coverage of the syllabus, and secondly the time management. ये दो चीजें important है for mock test. So therefore, for revision purpose, you try to refer your concise notes, precise notes, and progressively giving the test. Long test है, grand test है, and topic wise test है, then you come to full length mock test. और जो बच्चों का syllabus already complete हो चुका हो, then at this point of time it is highly recommended that you focus on grand test and mock test with revisions. So boys and girls, again I am emphasizing कि focus on essentially or making sure that in between the two mock tests you have another round of revision, particularly of those subjects in which you are facing difficulty. किसी को नेटवर्क्स में डिफिकल्टी हो रही है, किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम में या एल्गोरिथम्स में या डीबीएमएस में, जो भी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी हो रही है इन द मार्क टेस्ट, यू ट्राई टू रिवाइज दोस सब्जेक्ट बिफोर गोइंग फॉर नेक्स्ट टेस्ट. दैट्स हाउ यू शुड ऑप्टिमाइज योर टाइम. एंड मेंटेनिंग error log, error notebook is quite important to identify your mistakes that you are committing so that you don't repeat such mistakes again and again in the next test. That is also debugging part, very important. Okay, step 4, मैनेजिंग टाइम एंड स्ट्रेस. सो बॉयज एंड गर्ल्स, वन ऑफ द बेसिक रीजन जो आपके पोटेंशियल, जो आपके एफिशिएंसी को ड्रॉप करता है, वो ये है कि स्ट्रेस कब होगा? व्हेन यू ट्राई टू गो फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन. आप अपने परफॉर्मेंस को दूसरों से कंपेयर करोगे, देन डेफिनेटली यू गेट स्ट्रेस्ड. डोंट ट्राई टू. एंड improper approach of study, improper plan will definitely increase the stress. So for reducing or managing stress, what is quite important is sleep. So make sure that you are sleeping at least for 6 hours a day, minimum 6 hours, and not more than 7 hours. Okay, and mindfulness practices, practice meditation hai, deep breathing hai, light exercises to boost your concentration and anxiety levels. That is very important. And the last step, I would say always nutrition and hygiene. That is very important. So take good diet, to concentrate on exercise, don't neglect it. That is important. And be away from distractions of social media, engaging yourself and wasting the time on social media. Don't try to do that. Okay. Step 5, focus on high scoring sections. Okay, like I've already mentioned कि मैंने आपको पहले बताया, don't ever neglect general aptitude and engineering mathematics. मैं बार बार आपको repeat अपील कर रहा हूं बच्चों कि these are the two areas where many students, aspirants have seen ignoring and later paying heavy price for their performance in the GATE. So boys and girls, please focus on that. अभी ये remaining time में अगर आपने mathematics और aptitude नहीं start किया है तो please start कीजिएगा and try to complete it. Okay, Slepakshi for B4M. Still 4 subjects complete आपने नहीं किया. मैंने आपको अभी एड्रेस किया इस सेशन में कि what you should do is, with the help of crash course, you cannot think of completing all the subjects unless and until YouTube crash course से complete करना मुश्किल है, right? So you should basically make a study of at least important topics from regular course या फिर paid courses जैसा है GFG का crash course है. You can think of
taking up such short lectures, but trying to give a focus on high yielding topics. Okay. So these sections are very important. Use online resources and YouTube channels for concept clarity, solve previous questions very efficiently, and practice daily to build speed and accuracy. So at this point of time, जो बच्चों के subjects complete हो चुके हैं, जिसके 50%, 70% complete हो चुके हैं, don't just try to complete the remaining subjects without paying attention to revision and PYQ. So boys and girls, it is highly important at this point of time. It is highly important at this point of time that you should divide your time of day into 3 sections. Number 1, completing the remaining subjects अगर आपके हो. Number 2, PYQs, iterations. Number 3, mock test. So without completing few subjects, अगर आप सिर्फ revision और PYQs पे focus कर रहे हो या test series पे focus कर रहे हो, तो that is also incorrect. So boys and girls, गेट एग्जाम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह नहीं है कि आप सिर्फ एक दिन के लिए पर्टिकुलर कोर्स वॉच कर लो, 2 दिन के लिए वॉच कर लो या क्रैश कोर्स अटेंड कर लो. दैट इज गोइंग टू फेच हाई गुड मार्क्स और हाई मार्क्स. दैट्स नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट सेमेस्टर एग्जाम्स. यू नीड टू हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव, यू नीड टू हैव ए वर्सेटाइल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट गेट एग्जाम एंड फेयरवेल. ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए, real success stories, like for example from panic to rank. These are success story of Mr. Ankit Sharma's journey, all India rank 150 mechanical engineering 2025. ये देखिएगा उनका. It seems he has started his preparation in just last 3 months. So I have been emphasizing, मेरा last time का YouTube video भी अगर आप देखोगे, I basically made a calculative approach. I shown you a calculative approach that within 3 months also it's possible to complete the subject. So what Ankit is saying? Ankit is saying that he started my serious preparation just 3 months before GATE. So boys and girls, जिन्होंने भी 3 months before start किया हो, 4 months before start किया हो, और आपके mind में ये चल रहा है कि definitely can I crack or not, तो उनके लिए ये motivation है. तो please देखिएगा. Right? So in last 3 months he completed just before GATE. And he says he was panicking about incomplete syllabus, but therefore what he has done, he has focused intensely on revision, mock test and error analysis. So my dear students, boys and girls, तो ये 3 जो steps है, revision, PYQs, mock test and error analysis, debugging errors is quite important, primarily important for a good performance in the GATE exam. So smart planning, consistent time management completely turned his preparation around. So therefore, many GATE toppers across India started their focused preparation late but cracked the exam through their what? Strategic planning hai, disciplined execution of the action plan and unwavering belief in themselves. Many GATE aspirants, you are not alone. So dear students, जिन्होंने 3 months, 4 months before start किया हो, ठीक है, उनके लिए challenge है. If they can do, you can also do it. अगर उन्होंने करा है तो आप भी कर सकते हो. ऐसे अपने आप को बेसिकली ढालना होगा with a strategic plan, right? A perfect discipline in terms of execution, stressless environment, right? And basically you can say unwavering belief. आपने believe करना होगा. You can always think that yes I can do. ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो. पहले लोगों ने किया है, मैं भी कर सकता हूँ. ये belief काफी ज्यादा important है. Okay? Slepakshi, just now I'm telling the same pattern, same thing. कि डोंट गेट स्ट्रेस, डोंट गेट नर्वस. एग्जाम जैसे जैसे करीब आता जाता है, बच्चे नर्वस होते जाते हैं, डिसअपॉइंटेड होते जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू डेवलप ए बिलीफ कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, कर सकता हूं और मैं करूंगा. ये आप में एटीट्यूड अगर होगा तो आई एम वेरी श्योर यू कैन डू इट. Allu Sai, you have completed watching lectures of CDS, OK, DBMS, no problem. Almost you completed 70% of the syllabus, so therefore you shouldn't have any difficulty. आप स्ट्रैटेजिक प्लान बनाओ रिमेनिंग टाइम का. अब जो रिमेनिंग टाइम है उसका प्लान बनाना जरूरी है. आप क्या करोगे, डे वाइज प्लान, वीक वाइज प्लान एंड द रिमेनिंग 15 days प्लान, लाइक दैट. ओके, यस अहमद, वी विल इंटीमेट टू यू अबाउट द शेड्यूल ऑफ द कोर्सेस. ठीक है, वी विल इंटीमेट. So final message, boys and girls. Question is, can you still crack GATE 2026 having started 3 months back? क्या आप
आपके माइंड में होगा क्वेश्चन कि क्या मैं क्रैक कर सकता हूं, क्या मैं एक अच्छा रैंक ला सकता हूं? आंसर इज डेफिनेटली यस. सो believe in the journey of Ankit Sharma, people like Ankit Sharma, and then you can also basically start. So therefore, stop worrying, start acting, take yourself into action. That is very important. Okay, channelize your anxiety into focused action. What's left undone doesn't matter. What you do from this moment forward is very important. जो हो गया आप मत सोचिए उसके बारे में. आगे का जो टाइम है किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, कर सकती हूं, आप उसके ऊपर ज्यादा अपना फोकस करिए. So execute your strategy, plan smart, revise diligently, practice mock tests. I mean, these points have already been repeated. So the coming 2 months are very crucial, very important as far as GATE aspirants are concerned. So believing in yourself is the key. Believing in yourself is the main factor, main game changer for the GATE exam. Beauty Nature 7123, you have completed the syllabus. How effective I can revise? देखिएगा, रिवीजन के लिए मैं ये कहूंगा हमेशा फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन शुड बी बेस्ड ऑन लॉन्ग नोट्स. और आइडियली स्पीकिंग एक सब्जेक्ट को आप मैक्सिमम 2 to 3 डेज में कंप्लीट करना चाहिए. लॉन्ग सब्जेक्ट जैसे नेटवर्क्स है, डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लॉन्ग सब्जेक्ट्स यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द रिवीजन इन 2 days मैक्सिमम. फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन मे बी 1 day, थर्ड रिवीजन यू शुड गो फॉर बेसिकली शॉर्ट नोट्स के बेसिस पर रिवीजन करना चाहिए. और रिवीजन में हमेशा मैं ये कहता हूं, आई मीन दिस इज ओनली माय पर्सनल ओपिनियन, यू मे टेक इट, यू मे इग्नोर इट. रिवीजन के लिए बच्चों को मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा यू स्टार्ट द सब्जेक्ट ना ऑलवेज फ्रॉम लास्ट चैप्टर. ऐसा होता है बच्चे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर and they spend more and more time in the initial chapters and they try to skip or ignore the last, give least important to the last topics. जैसे कि for example operating system है, I would always say you start revision from file system, device management, then you come to memory management, then you come to synchronization, फिर CPU scheduling. और जो टॉपिक्स में आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन रिवाइजिंग देम. ऐसे सब्जेक्ट जो काफी सिंपल है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन रिवाइजिंग. प्रोग्रामिंग इन सी, डेटा स्ट्रक्चर्स में रिवीजन क्या करना है? देयर इज नथिंग टू रिवाइज एक्सेप्ट फॉर सम टॉपिक्स ऑफ ट्रीज एंड ग्राफ्स. समझ रहे हो? सो डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम इन रिवाइजिंग सिंपल इजी सब्जेक्ट्स. पुट मोर फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा. और ये स्ट्रैटेजी एक बार प्लीज अप्लाई करके देखिएगा कि रिवाइजिंग फ्रॉम द लास्ट, emphasizing more and more focus on those topics in which you feel you are weak. ये एक बार आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखिएगा. आई एम वेरी श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू. आदित्य बेलकुड़े, द सेम पॉइंट आई एम रेफरिंग टू कि किस तरीके से आप रिवीजन को ऑप्टिमाइज करना है. ठीक है, रेगुलर बेसिस पर. कल एक बच्चा क्लास में मुझे कहा था, सर आई एम अनेबल टू रिमेंबर द रिकरेंसेस, आई एम अनेबल टू रिमेंबर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज. तो देखो आप एक शीट बना लीजिएगा, यू राइट ऑल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज. और रिमेंबर करने के लिए है जैसा कि आप स्टार्ट कीजिए डिवाइड एंड कॉन्कर के कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार पढ़िएगा और पेपर पर लिखने की कोशिश कीजिएगा. इफ यू ट्राई टू राइट डाउन यू विल रिमेंबर, बॉयज एंड गर्ल्स. एक बार सारा आप खुद ही से लिखने की कोशिश कीजिएगा. 1-2 बार करने से आई एम वेरी श्योर इट इज गोइंग टू गेट रिटेन इन योर माइंड, इट इज गोइंग टू गेट स्ट्रेंथन इन योर माइंड. वैष्णवी N1M, मेरी अपील है कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी एड्रेस किया था मैं कि अगर आपके टीओसी और डीएम इनकम्प्लीट है, डोंट लीव इट. आप जरूर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, particularly or from the complete courses, paid courses rather than crash courses, because without any what do you say, targeting anyone, I just again re-emphasize the same point that crash courses of YouTube will only help for a complete revision, good revision. It won't help for a comprehensive coverage of the syllabus. It cannot guarantee that you can score well with the crash courses of YouTube. No. That's my perception. You may disagree, you may disagree with me. हाँ बिल्कुल कर लो. आलू साई सामित रेड्डी, yes, you can do parallelly aptitude algorithms, एक साथ कर लो आप, नो प्रॉब्लम. ठीक है. विष्णु गुप्ता, अगर आपने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं दी है तो प्लीज स्टार्ट इमीडिएटली टेस्ट सीरीज.
start immediately test series. जितना आप ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, ग्रैंड टेस्ट दोगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि हाउ गुड इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है. तन्वी शर्मा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, अगर आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं उसके लिए सजेशन ये है, एक ही सजेशन है कि प्लीज try to go for more revision or try to go for another round of revision before taking up the test. Before taking the next test, complete one round of revision and then go. Highlighting or emphasizing on the subjects or the topics in which you are feeling weak. Okay. ठीक है? So boys and girls, now this is the USP of our programs at the GFG with ultra affordable prices. We have launched a course particularly for helping the students in practice session. तो जो बच्चे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस, उनके लिए एक बेसिकली गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से. वी आर कमिंग अप विद ए प्रोग्राम कॉल्ड मिशन 100 विद एन इंटेंशन ऑफ helping the students to practice the questions, right? Good questions, good quality questions. Calling as Mission 100 program for both CSIT D at a very very affordable price, 499. तो जो बच्चे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस और इम्प्रूव करने के लिए दिस प्रोग्राम विल बी ए वर्सेटाइल प्रोग्राम, विल बी डेफिनेटली ए ब्लेसिंग for helping them to crack the GATE exam, prepare well for the GATE exam in terms of practice questions. So it's a very good program where we are per subject we are intending to solve at least 50 to 60 questions per subject, 50 to 60 questions, quality questions, which will help the students in making their preparation to score well in the forthcoming GATE 2026 exam. Apart from that, the most expected 500 plus questions will be covered, and mentor-led learning, expert mentors. You can interact with the faculty members, okay, and 24/7 doubt support, mentorship, and the batch for students who are targeting a rank within 100. PYQ in the form of quiz. Course duration is 100 plus hours. So in this remaining time, I am very sure this program is going to be of immense help for those students who are preparing for GATE. And the big surprise is that the test series is also included free of cost. The test series of GFG is free of cost, included in this Mission 100 program for those who subscribe for this Mission 100 program. And apart from that, for GATE 2027 batch, already we have launched the courses which are like live plus placement, live plus recording plus placement, live plus recording plus placements at the affordable price of 11,699, which I believe is an ultra affordable than in comparison to other platforms. ठीक है. Vishnu Gupta, Mission 100 is a live lecture. Mission 100 is live, it is not recorded. समझ रहे हो बात? So you can get an opportunity to interact with us in a live mode. Okay, so it is not recorded. It is not recorded. Ayush O5J. I would recommend minimum you should solve PYQs 3 times better. For the past 25 years के जो questions है, एक आप minimum 3 times ideally recommended. Okay. Okay, Sahil. Okay, Sahil, my best wishes to you, beta, and God bless you and help you to succeed and score very well, crack GATE with within 100 rank in GATE 2026, right? So test series is included in the Mission 2027 program. So you can use the coupon code ACE-GATE 35 to get a 35% off. And the same thing we have for DA, those students who are interested in GATE DA program, we have offers for them. GATE 2028 DA batch के भी जो सो programs है at a very affordable prices, and GATE 2028 CS batch, same thing. Okay. So as such, all the details you can get, and these are our erudite faculty. In addition to that, we have GATE Gurukul program also with for 2027. And this is for both CS and DA at a very price of 29,999. Okay, with more additional services, and the details of that you can see on our website. So these are about the batches. So we have very experienced and erudite faculty on our platform.
मैं ये तो नहीं कहूँगा इंडियाज नंबर 1, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा. I say reasonably we have good faculty members, experienced faculty members and erudite faculty members to help supplement the student for the great preparation. I don't believe in adjectives, people claiming India's number 1 faculty, India's number 1 team. ऐसा I don't say. We are all teachers and we try our level best to help the students in making their preparation. ठीक है? So that is what I have, boys and girls. I hope you have our Telegram channel. You can join and interact with us. Mentorship programs है, जैसे कि मैं live आता हूँ on every Thursday around 2 to 30 p.m. right, to interact with the students, to take up their doubts, clarifying their doubts. तो आप join कर सकते हो मेरा Telegram channel, and you can also get connected with me to seek clarification, seek doubts. Mohit.vocals, you are talking about digging a story, digging up a thing which was 3 years or 4 years back. It's of no use. It's of no use. Present में जियो और present में रहने की कोशिश करो. That's always better, Mohit, right? Okay. So boys and girls, I think we have spent enough time and I don't want to waste much of your time. So go ahead, लगे रहो अपने काम पर. And as I said, don't try to level down your motivation. Don't try to get into deterioration with depression and demoralization. Try to always be positive, right? And whenever you are feeling low, don't hesitate to connect with us. We will be definitely helping you to boost up your confidence. And I wish all of you a very great success. And in the remaining time, and in the remaining time, basically, I wish that you prepare very well for the forthcoming GATE 2026. Okay. So that's it from my side. Okay. So without wasting much time, please go ahead and continue your preparation. So thank you so much. Take care and good night.